Assalamu alaikum everyone. As we have discussed previously, that we will discuss about the tariff, and as we have read out about the tariff, or you can say हमने ये word काफी दफा use किया है, तो I think there should be some short description about the tariff कि tariff क्या होता है और different types कैसे उसकी होती हैं. अगर tariff को अगर हम define करना चाहें तो हम कह सकते हैं it is the rate of consumption of the electrical power. You can say it is the units of the electric that you are utilizing at the utilization end after the distribution. तो मेन ऑब्जेक्टिव टैरिफ का ये है कि जो कॉस्ट है, जो जनरेशन कॉस्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम डिफरेंट कंज्यूमर. एंड द टैरिफ मस्ट रिकवर द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, losses, maintenance costs, and a satisfactory return on the total capital investment. There can be some different rates which are maintained for a different level of consumer. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम टैरिफ की, तो जो इलेक्ट्रिक रेट है इज द प्राइस यू पे पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू योर एनर्जी यूटिलिटी ऑफ रिटेल. द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ structure is the combination of rates, additional charges, and other rules that determine how your electrical bill is calculated. तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आता है, तो जब तक आपको टैरिफ का नहीं पता तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते आया कि आपका बिल ठीक है या नहीं. तो एटलीस्ट आज सब एक काम करें, अपने घरों के बिजली के बिल देखें, देखें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. और ये नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द टैरिफ रेट nowadays in Pakistan or in different discourse. There are different types of the tariff. For example, there can be some simple tariff, flat demand tariff, peak tariff, power factor tariff. It depends कि आप जो यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एज एन इंडस्ट्रियल आप यूज़ कर रहे हैं, या डोमेस्टिक लेवल यूज़ कर रहे हैं, या कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, गवर्नमेंट कैन इम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ tariff upon you. फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल टैरिफ की बात करें, तो ऐसे स्ट्रक्चर में तो जितने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उसकी बेस पे आपका बिल आ जाता है, इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म रेट टैरिफ कहते हैं. ये टैरिफ इनकरेज करता है कस्टमर्स को कि वो डिस्कनेक्ट कर दे इक्विपमेंट जब वो यूज़ ना हो. जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा यूनिट्स को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बिल भी आएगा. सिंपल टैरिफ सी इज इक्वल टू डी वाई, टोटल कॉस्ट है जितना आप यूनिट्स यूज कर रहे हैं और जितना भी रेट रख दिया गया है पर यूनिट प्राइस रख दी गई. Then there is some flat demand tariff, and in this type of tariff structure, the different customers are charged at the same rate, but the total demand and the energy consumption was fixed. Electricity bill depends only on maximum demand and independent of the energy consumed. पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि जो आपकी मैक्सिमम डिमांड है उसी के मुताबिक सारा बिल वो आपसे कलेक्ट करते हैं. In the early phase of electricity generation, energy consumption is confined in few applications such as in light, and hour of electricity use is also fixed. They used to be charged on the basis of the number of lamps installed and the hour of usage. या आप अगर हम आसान लफ्जों में कहें कि जो आपका कनेक्टेड लोड है वही आपका टैरिफ है और आपका जो बिल है वो फिक्स होते हैं फ्लैट में. Then there is block rate tariff, and in this type of tariff, consumers are charged blockwise. One block is charged at higher rate and the other blocks are charged at relatively reduced rate. And this type of tariff structure increases the load factor, so the generation cost is reduced overall. Load factor क्या होता है? It is the ratio between average demand over maximum demand. Then there is flat rate tariff. अगर इसकी हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि यूनिफॉर्म रेट नहीं होगा. देयर विल बी सम हायर रेट्स व्हिच आर चार्ज फॉर पावर लोड देन नॉर्मल लोड. इसी तरह दिस टाइप ऑफ रेट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लोड फैक्टर कि आपके एवरेज लोड कितना है
और मैक्सिमम आपके पास डिमांड कितनी है, और डिवर्सिटी आपका फैक्टर कितना है, कितना आपका जो लोड है वो डिवर्सिफाइड है। तो डिवर्सिटी फैक्टर की डेफिनेशन, लोड फैक्टर की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा आप गो थ्रू कर लीजिएगा फ्रॉम द वेरी अर्ली स्लाइड्स। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ दिस सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था तो हमने ये बहुत डिटेल में हमने ये एक्सप्लेन की। This type of method is usually employed in public, and in this type of tariff, the different meter is used for a different load, and it is based on diversity factor, which is difficult to track. Then there is another tariff, which is known as two-part tariff. ऐसे टैरिफ स्ट्रक्चर में जो आपका चार्ज रेट होता है, हम दो कंपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वन इज फिक्स चार्ज एंड अदर इज रनिंग चार्ज। जो फिक्स चार्ज है, जो आपकी मैक्सिमम डिमांड है उसके मुताबिक हम फिक्स कर देते हैं, और जो रनिंग चार्ज है वो आप जितने फिर यूनिट्स आगे फर्दर कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। दिस टैरिफ स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज हॉपकिंसन डिमांड रेट। तो टैरिफ की बात करें तो आजकल जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। यानी अगर हम मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो इसमें डीरेगुलेशन नहीं है। अब डीरेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब होगी तो टैरिफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कैसे? अभी आपको पता है कि आपकी जितनी भी जनरेशन है, इफ यू आर रिजाइडिंग एट द गुजरांवाला एरिया, तो आपको पता है दे देयर इज मोनोपोली एंड गैपको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। बट इन फ्यूचर, like some other countries, developed countries, the scenario will be somewhat different. फॉर एग्जाम्पल डीरेगुलेशन हो जाएगा। डीरेगुलेशन मीन्स कि पावर्स को डीरेगुलेट कर देना, डिवाइड कर देना। जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल जनरेशन कंपनी है, उसके आगे देयर विल बी डिफरेंट डिस्कोर्स। लाजमी नहीं कि गुजरांवाला की बात हो रही है तो गैप को ही होगा। देयर शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सबसे कम बिड करेगी, जिस तरह बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है, उसी तरह ऑक्शन बेस ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह हुआ करेगा। तो जो ऑक्शन विन करेगा, जो बिड विन करेगा, तो वो आगे सप्लाई कर सकता है। और डीरेगुलेशन का फायदा क्या होगा? एक तो कंपटीशन आएगा, जो कंज्यूमर एंड में बहुत फायदा होता है, इनको प्राइजेस बड़ी रीजनेबल मिलती हैं। जैसे कि के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो उसकी वजह से होता क्या, मोनोपोली है तो ओवर चार्जेस करते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं। लोड शेडिंग भी है। इट मीन्स they are not expanding on the consumers, but they are overbilling because they are as monopoly and there is no competition among it. तो डीरेगुलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो डीरेगुलेशन में होगा, एक तो प्राइसेस कम्पिटिटिव होंगी, दूसरे में जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और वो लॉसेस कम करने के लिए जितनी भी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जितनी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, करेंगे। क्योंकि लॉसेस अभी गैप को है, तो उन्हें पता है कि जितने भी लॉसेस हैं वो गवर्नमेंट के खाते हैं, दे आर नॉट प्राइवेटाइज। लेकिन जब प्राइवेटाइज होंगी, डीरेगुलेशन सिस्टम होंगे, वो अपने लॉसेस भी रिड्यूस करेंगे। और जो चेक एंड बैलेंस, जो हम बिजली चोरी होती है उसको भी अक्सर हम इसी खाते में डाल देते हैं लॉसेस के चक्कर में। तो वो भी इंश्योर करेंगे कि बिजली लॉसेज जो थेफ्ट है वो भी कम से कम। बिजली थेफ्ट की बात की तो इंशाल्लाह एक छोटा सा लेक्चर मुझे याद करवाइएगा, बिजली चोरी पे भी रखेंगे, तो हम वो देखेंगे हाउ दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डूइंग थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बिजली चोरी की जाती है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी रोकथाम क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा इंजीनियर की बिजली चोरी कैसे की जा रही है, एनर्जी मीटर फॉर एग्जांपल कोई फेज रिवर्स करके, कोई अगर पुरानी बात करें तो जब एनर्जी मीटर यूज होते तो डिस्क को स्लो कर देते थे, मैग्नेट लगा के, उल्टा करके, एंड सो ऑन, देयर द डिफरेंट कंडीशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेजर सॉरी डिजिटल आपके पास एनर्जी मीटर आ गए, तो इसमें भी वो काफ़ी बिजली चोरी करने के तरीके हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसको बाईपास करके मीटर को करते हैं। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन सम लेक्चर। फिर एक आपके पास मैक्सिमम डिमांड टैरिफ आता है।
two-part tariff charges fixed rate on the maximum demand, which is not actually measured. So consumers have to pay the unnecessary price. क्योंकि एक दफा मैक्सिमम डिमांड आपने नोट कर ली, उसके बाद आप इसको दोबारा ऑब्जर्व नहीं कर रहे. So these disadvantages are removed using a maximum demand tariff structure in which the maximum demand is actually measured, and this type of tariff structure is usually applied to bulk supply and industrial consumer. Then other thing is peak tariff. इसमें हम लोड को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: नॉर्मल लोड, पीक लोड और ऑफ पीक लोड. And peak load is the load at which the amount of consumption is high, which causes stress on generation system. इसकी वजह से इसका टैरिफ रेट भी हायर होगा as compared to normal load or off peak load. So the different tariff rates are different for different load type, and tariff rates are higher for peak load and lower for the off peak load. Then another thing is power factor tariff. जैसा कि हमने पावर फैक्टर की बात की, तो हमने बार बार कहा कि जब भी पावर फैक्टर लो होगा बहुत ज़्यादा, तो डिस्कस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें पावर ज़्यादा डिलीवर करना पड़ रही होती है और जो एनर्जी मीटर है वो रियल पावर से मेजर कर रहा होता है. So the efficiency of the system depends on the power factor of the system. Low power factor means high loss, which leads to the poor efficiency. I don't think बहुत ज़्यादा डिटेल में अब जाने की ज़रूरत है, हमने इसे ऑलरेडी पोर पावर फैक्टर को बहुत डिटेल में हमने गो थ्रू कर लिया. So consumers are charged for a poor power factor in order to increase the utility of the plant and the equipment to the maximum. kVA maximum demand, kilowatt hour, and kVARH tariff, and average power factor tariff are the methods of power factor. kVA maximum tariff is same as we have discussed in two-part tariff, but instead of kilowatt, kVA is measured now. Power factor increases with a decrease in kVARH, so it is charged separately. And in average power factor tariff, one reference power factor is taken as reference and the rate is charged. जितना ज़्यादा rate charge होगा for low power factor, then reference and discount is given for high power factor, then the reference price. Thank you very much. I hope कि कैसे different worldwide different tariffs यूज हो रहे हैं, you are clear with this concept. Thank you very much.